हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आम लास्ट लेक्चर रे रिलेशन रो गोटे कन्सेप्चुअल एक्सरसाइज करछे। तापरे एक्सरसाइज रे हम दुईटा वीडियो बनेछे। टोटली हम रिलेशन पूरा कंप्लीट कर साइछे। नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट विथ फंक्शंस। फंक्शन हम स्टार्ट करी। तो जो पिला ने चैनल रो नुआ अछंती और चैनल को फॉलो करछन से मन को रिक्वेस्ट से मन फर्स्ट रे सब्सक्राइब कर देबे, बेल आइकन को प्रेस कर देबे आ जेतेबेले वीडियो देखते लाइक बटन को प्रेस कर दियो, so that I will be motivated to do all those good work for you. तो आम कहीं रिलेशन सरी देछे, we have completed relation, concepts plus exercise एमती तीनटा वीडियो हमर बन साइछ ऑलरेडी रिलेशन ऊपर प्लेलिस्ट को जाके देख पारिए। ताजी हम स्टार्ट करियो फंक्शन। नाउ व्हाट फंक्शन इज और फंक्शन रो डेफिनेशन कोन। फंक्शन कोन होची सब रिलेशन गोटे गोटे फंक्शन। तो फंक्शन टा गोटे रिलेशन हबो, फंक्शन टा कोन हबो गोटे रिलेशन हबो, किंतु सब रिलेशन फंक्शन हबो। नॉट ऑल द रिलेशंस आर फंक्शंस। जेतिक रिलेशन आम लिखा सब गुड़ाक फंक्शन हेनी। तो कौ रिलेशन टा फंक्शन हम, कौ रिलेशन टा फंक्शन हेनी, केतटा कंडीशन अच्छे। नाउ व्हाट द डेफिनेशन इज, डेफिनेशन कहूँ जदि गोटे रिलेशन अच्छे, रिलेशन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एमती लिखा हम जानते आगु। Okay, so a relation R from A to B is said to be a function. It's said to be a function. A relation R from A to B is said to be a function. Now, if every element of A, if every element of A A माने set A has a unique image, has a unique image in B, unique image in B. यार अर्थ that means A रे हमर जेतिके एलिमेंट अछि, A रे हमर जेतिके एलिमेंट थिबे तार सबु एलिमेंट रो गोटिए गोटे इमेज हमर B रे रहियो। एवरी एलिमेंट दुईटा जिंस एठे अंडरलाइन करियार अछि। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो प्रति एलिमेंट रो जे कोन से एलिमेंट ए रो आपण सिलेक्ट करिवे तार गोटे यूनिक इमेज रहियो। यूनिक इमेज माने एक लता इमेज, गोटे ही इमेज रहियो। विसिकेशन को ना देखो रे वाला विसिकेशन सेमती गोटे एलिमेंट रो गोटे ही इमेज रहियो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज वैलिड फॉर ऑल एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। माने ए रे जेतिक एलिमेंट थियो सब एलिमेंट रो बी रे गोटे गोटे इमेज रहियो। देन दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस। तो दुईटा जिंस ध्यान देबे, ए रे को एलिमेंट खाली न रहिवार अछि, एमती को एलिमेंट ए रे न रहियो जार इमेज नाही। तो ए रे सब एलिमेंट इमेज रहियो। सेकंड कथा गोटिए ही इमेज रहियो, ओनली वन इमेज, यूनिक इमेज रहियो। आमे चारटा एग्जांपल नै छै, सो लेट अस लुक सम ऑफ आवर एग्जांपल्स। एग्जांपल देखिए आमे चेक करिवा whether the given things are functions or not. This is example number 1. Example number 2. जेतल पर मु एग्जांपल मार्क कोछ आपन माने सेतल पर देखि दियो कि कोटा कोटा फंक्शन हबो आ कोटा कोटा फंक्शन हबोनी। कोन कोन देखिए दुईटा जिंस देखिए। प्रथम जिंस ए रे कोई भी एलिमेंट खाली न रहिवार अछि, माने फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर विल बी एन इमेज इन बी एंड दैट टू ए यूनिक इमेज, गोटिए एक इमेज रहियो। तो देखो एग्जांपल 1 रो जद कथा कहले हमें डी रो कोई इमेज नहीं, डी रो कोनोसी भी इमेज नहीं, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। एटा हमर फंक्शन हबोनी, एठी हम क्रॉस मार देले। ठीक अछि। रीजन कारण डी गोटे एलिमेंट अछि ए रे जार को भी इमेज हमर बी रे नाही। देयर इज नो इमेज ऑफ डी फ्रॉम ए टू बी। तो जो एलिमेंट ए रे अछि डी एलिमेंट तार कोनोसी इमेज बी रे नाही, सेति पे सेटा फंक्शन हबो। नाउ कम टू एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 कोन कहू देखो। एग्जांपल 2 कोन अछि, ए रो गोटे इमेज अछि, बी रो इमेज हेगला। देखो ए रे एटा इमेज टा गोटे मिनट, ए रो इमेज टा कोटा देखो, ए रो इमेज हेगला 1, बी रो इमेज हेगला 2, ए रो 1, बी रो 2, सी रो 4 और डी रो 3। देखो सब एलिमेंट इमेज अछि और यूनिक इमेज मध्ये अछि। यूनिक इमेज माने गोटे एलिमेंट रो गोटे इमेज। सो दिस इज अगेन ए फंक्शन, ये भी फंक्शन। ठीक अछि। कम टू एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 देखो, ए रे सेट ए कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। सेट ए रे केतना एलिमेंट अछि, गोटे एलिमेंट अछि आ गोटे एलिमेंट जदी अछि तार गोटे इमेज रहबा दरकार, किंतु एठी केते इमेज अछन देखो। A has 4 images। एमती हेले फंक्शन नो।
ए शुड हैव ओनली वन इमेज ए रो गोटिए ही इमेज रहबा दरकार जदी सेमते हला फंक्शन एठी देखो एग्जांपल 4 तो एग्जांपल 1 हमर फंक्शन नुहो एग्जांपल 3 इज नॉट आल्सो रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन एग्जांपल 3 हमर फंक्शन नुहो अब एग्जांपल 4 देखो ए रो गोटिए इमेज अछि 1 बी रो भी गोटिए इमेज अछि सी रो भी गोटिए इमेज डी रो भी गोटिए इमेज माने ए रे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जो सेट ए अछि एथरे को भी एलिमेंट खाली नहांती आ सब एलिमेंट गोटिए इमेज अछि सो दिस इज अगेन ए फंक्शन तो एग्जांपल 2 और 4 अछि फंक्शन और एग्जांपल 1 और 3 फंक्शन नो ये जो ए रो एलिमेंट गुडा अछंती ए मानु को होछि डोमेन कोन कहबा हमें डोमेन यार इमेज को कोन कहबा रेंज इमेज को कोन कहबा रेंज पूरा सेट बी इज कोडोमेन सेट बी इज योर कोडोमेन बी माने set of images a माने element domain माने set a is your domain and set of images are called range and set b is called codomain therefore range टा जो होची ये सब बेले कोडोमेन रा सबसेट हो range is subset of codomain बुझिगला फंक्शन बेसिक function कौन होगा गोटे रिलेशन r from a to b will be set a function if every element of a रो सब एलिमेंट रो b रे गोटे ही इमेज रहियो then this is called a function एबे देखबे टाइप्स ऑफ फंक्शंस केते टाइप रो फंक्शन अछि टाइप्स ऑफ फंक्शन रो प्रथम होछि तमरा 1 1 फंक्शन ना रो कोन जणा पड़छि ना रो जणा पड़छि गोटे एलिमेंट रो गोटे ही इमेज रहियो गोटे एलिमेंट रो गोटे ही इमेज रहियो दैट इज if function is 1 1 it is 1 1 if distinct elements in x have distinct images in y जदि हमर x गोटा सेट रहला आ गोटा सेट रहला y this is x and this is y distinct element रो 1 रो a 2 रो b 3 रो c तो distinct element रो distinct image रहबार अछि ठीक अछि अब मैथमेटिकल डेफिनेशन होछि जदि x1 x2 को हमें a सेट रो एलिमेंट नेबा if you consider x1 x2 both belongs to x then f of x1 must be equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 एमती गोटे only one relation जदि एमती गोटे रिलेशन हमको मिलला then the function is said to be 1 1 गोटे फंक्शन नेले फंक्शन रे x1 x2 डोमेन रो दीटा वैल्यू उठेले जदि x1 equal to x2 होबो then f of x1 equal to f of x2 जदि x1 is not equal to x2 जदि x1 is not equal to x2 then f of x1 is not equal to f of x2 बुझे गुड एग्जांपल नहीं जबे let f is a function from a to b such that f of x equal to 2x minus 7 check whether this function is 1 1 or not f टा को हमें कौन करियो रियल नंबर को फंक्शन बना दो let f be a function from r to r f be a function from r to r such that f of x equal to 3x minus 7 तो देखो एटा हम कौन कंसीडर करियो फर्स्ट विल कंसीडर कि let f of x1 equal to f of x2 for all x1 x2 सब x1 x2 belongs to r माने डोमेन रो एलिमेंट हेथिबे कोन x1 और x2 जदि डोमेन रो एलिमेंट हले अब कंसीडर हम कोन करबा कि f of x1 equal to f of x2 एठो हम प्रूफ कोन करबा x1 is equal to x2 ओके तो f of x1 कोन हो सिंस f of x केतो अछि पहिले 2x minus 7 अछि f of x1 will be substitute x by x1 तो x जगह रे x1 लिखबे and this will be 2 into x1 minus 7 equal to f of x2 will be 2x2 minus 7 है minus 7 दुटा से अगर कैंसिल हो गला तो 2x1 equal to 2 times x2 तो 2 कैंसिल हो गला x1 is equal to x2 हां मिल गला therefore f is 1 1 f is 1 1 जदि एटी गोटिए एमती करे गोटिए रिलेशन मिलला या व्यतीत आउट को रिलेशन न मिलियार अच्छा एक्सेप्ट दिस नो अदर रिलेशन विल बी अलाउड देन ओनली द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 माने गोटिए एलिमेंट रो गोटिए ही इमेज रहलो then only the function is said to be 1 1 and this is the example mathematical example is if f of x1 x2 belongs to a then f of x1 equal to f of x2 जदि हला
x1 equal to x2 hobo. For x1 x2 belongs to x. If x1 is not equal to x2, then f of x1 is not equal to f of x2. माने functional value equal हेले x रो value equal होबो, functional value equal न हेले x रो value equal होबो. So that is what 1 1 function is. आउ जदि गोटे function 1 1 हेला, a function which is not 1 1 is called many one function. Not 1 1 माने many one. एटा होची note. Not 1 1 is same as many one. Not 1 1. Okay. Not 1 1 is many one. Jodi 1 1 no hela, konosi karan to jodi 1 1 no hela, that function will be always onto function. Now 1 1 hegala, 1 1 function au gote na hochi injective. One function out now is injective function. केतले एग्जाम रे इंजेक्टिव कहयो केतले 1 1 फंक्शन कहयो बोथ आर सेम. दुईटा ना अछि गोटे 1 1 फंक्शन आ गोटे इंजेक्टिव फंक्शन. पिला मानकर 1 1 फंक्शन ता तो मन रो इंजेक्टिव नाटा मन रो. सो ट्राई टू रिमेंबर द नेम. 1 1 इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव. ओके. चल सेकंड वन इज ऑन टू फंक्शन. सेकंड वन इज ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन माने कोन? फॉर एवरी y जदि मु गोटे फंक्शन नै गली x to y, let this is your x and this is your y. जदि मु x to y की गोटे फंक्शन नेली, f is a function from x to y. For every y there must be an x. सबु y पे गोटे x रो रिलेशन रहिबो. For every y, each and every y there will be a corresponding x. एटा कोन कहउछंदी? जदि y रे गोटे एलिमेंट अछि तार प्री इमेज x रे रहबा दरकार. Then the function is said to be onto. Definition देखो, f is a function from x to y is said to be onto or surjective. The second name is surjective. Surjective. Okay. If range of f रो जो range होछि equal to y, that is every element of y, एटा मन रो जल्दी है ना, that is every element of y is the image of some element of x. y रो सबु एलिमेंट x रो को ना कोई एलिमेंट रो इमेज हेथियो और y रो प्रति एलिमेंट पे x रो गोटे प्री इमेज थिबो. then that is onto or surjective function. कोन जो प्लान सेटा onto हे जो या surjective function हे. एबे भाबो जदि y रो सबु एलिमेंट पे x रो गोटे एलिमेंट जदि रहिबो ताहले हम कोन कहले onto. जदि onto न हैला तबे हम कोन कहबा into. onto न हैले कोन कहले into. एबे भाबो इठी अछि 1 2 3 4 आ एठी रहिला a b c d e एमते रहिला. यार गोटे एलिमेंट हे गेला, यार गोटे हे गेला, यार गोटे हे गेला और यार गोटे हे गेला. नाउ in set y there is an element e which do not have any pre-image. गोटे एलिमेंट e रहिला जार कोनोसी प्री-इमेज नाही. e रो को प्री-इमेज रहिला ने तो e रो जदी कोई प्री-इमेज नाही एमती का रिलेशन दीज आर नॉट 1 1. एबे हम कोन पढले 1 1 कोन पढले एबे हम कहबा एटा 1 1 नो. दिस इज नॉट 1 1. if not 1 1 this is into. if not 1 1 this is into. एठी आ गोटे नोट लिखबे. नोट कोन होची in onto function y रो सबु एलिमेंट रो कोई ना कोई इमेज रहियो. for each and every element of y there will be an element in x. तो यार जो रेंज हे गला is exactly equal to codomain. range is exactly equal to codomain. एटा मन रखियो. range is exactly equal to codomain. Here range is not a subset. Here range and codomain both are equal. देखो ए एलिमेंट रे जदि हम डोमेन कहबा 1 2 3 is the domain. range कहबा 1 abc. here range is abc, codomain is also abc for a function to be onto. एठी कोन हबो into function वासन. into function कोन करछि गोटे function x to y is called into function if range of f जो range ता हबो से y रो सबसेट हबो. से y रो कोन हबो सबसेट हबो. माने एम्ति हेई पारे y रो एटलीस्ट कम से कम गोटे एलिमेंट y रो रहिबो which do not have a pre image in x. that is at least one element in
one element in B, at least one element in B which do not have a pre-image in X. जदि ये y कह b कहले ये a कहीदेबा एटा a कहीदेबा एटा को b कहीदेबा ठीक अछि तो ऑन टू बुझगले y रे सब एलिमेंट पय जदि a रे हां y रे सब एलिमेंट पय जदि x रे प्री इमेज रहिला ऑन टू जदि y रे को गोटे दुटा एलिमेंट एक्स्ट्रा हे गेला जोटर प्री इमेज नाही देन इनटू ओके in case of on to range is always a subset of codomain for a function but on to function with a special type of function जोटी range is equal to codomain तो एमती 1 मार्क क्वेश्चन आसे MCQ रे the type of function in which range is equal to codomain तो को function that is on to range is a subset of codomain जति range subset of codomain हला माने into here range is a subset of codomain look here range is a range जोड़ा आछो सेटा कोडोमेन रो सबसेट हबो एठी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बुझि गेला आगु पढिबा नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली केतरा फंक्शन मु तुमु देछि हमें आइडेंटिफाई करिवा व्हिच वन इज 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू एवरीथिंग द फर्स्ट एग्जांपल नोछ फर्स्ट एग्जांपल कोन नै देखो ए रो सब एलिमेंट पे x रो सब एलिमेंट पे y रे इमेज अछंती माने ये 1 1 one element corresponds to one element ଆଉ y ର ସବୁ element ପାଇଁ x ର कोना को element अछंती तो 1 1 as well as on 2 ठीक अछि ना कम टू द सेकंड वन देखो एटा तो 1 1 तो अछि काइना each element of x has an image in y ए रो सब एलिमेंट रो y रे गोटे इमेज अछंती किंतु y रे गोटे एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गेला y has one extra element which do not have any pre-image in x माने ये onto नुहो if it is not onto it must be into मु कहितले आपनु जे जोटे फंक्शन onto हलानी से into हबो अब देखो 80 example 3 come to example 3 this is your third one okay now what the third one says कि a and b both are having a single image so this is many one आ y रे सब एलिमेंट रो कोई ना कोई प्री इमेज अछि y रे सब एलिमेंट रो कोई ना कोई प्री इमेज अछि माने on to तो many one and on to ठीक अछि आ लास्ट एग्जांपल ता देखिबे लास्ट एग्जांपल कोन अछि देखो ठीक लास्ट एग्जांपल हे गेला many one and y रे जदि गोटे एलिमेंट खाली रह गेला ता माने into many one and into ठीक अछि many one on to many one into बुझिया ना कंपोजिट फंक्शन कोन होछि जदि तीनटा सेट रहिला गोटे सेट हेगला x गोटे सेट हेगला y गोटे सेट हेगला z नाउ एठी हम कोन कहै f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y and g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z ठीक अछि देयरफॉर gof जो हबो that is a function from x to z ये y cancel हेगला तो x to z जो फंक्शन हबो that is gof and gof is also called gof of x and that is a function from x to z this is called composite function माने function inside one more function तो जो फंक्शन टा x रू z को गला जो फंक्शन टा x रू z को मैप करियो this function is called gof okay now f is a function from x to y g is a function from y to z then the function from g to x to z then the function from x to z जो फंक्शन x to z को गला सेटा हेगला gof तो gof रे डेफिनेशन कोन हेगला बुझिला ना gof हेगला gof of x will be equal to g of f of x and f of g of x equal to f of g of x माने एठी आउटर फंक्शन हेगला g इनर फंक्शन हेगला f एठी आउटर फंक्शन हेगला f इनर फंक्शन हेगला g बुझिला आ देखो f फंक्शन रो डोमेन कोन f फंक्शन रो डोमेन हेगला y आ तार रेंज हेगला x हेगला डोमेन y हेगला रेंज फॉर द फंक्शन f x इज द डोमेन y इज द रेंज बट जो y ता रेंज हे छै नै कि को फंक्शन रो f रो सेटा g पय डोमेन हेगला सेटा g पय कोन हेगला डोमेन एठी जोटा रेंज थिला एठी से डोमेन हेगला
ठीक अच्छे। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड GOF फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, function inside a function is called composite function. There are some properties also. Composite function केतरा property अच्छी. Property कौन? Composite function is associative. Associative माने यदि h गोटे function अच्छी, HOG of x will be equal to HOG of f. HOG of associative. माने order same रहेगा. यदि f गोटे फंक्शन अच्छे x to y और g is a function from y to z, f is a function from x to y and g is a function from y to z. यदि f और g onto हेले, f और g onto, f and g are onto, यदि f और g onto हेले, then g और f is onto, then g और f onto. यदि दुईटा जाक 1 1 हेले, if f and g are 1 1, then also g और f is 1 1, है ना? देखो मु कौन कहूँ GOF कथा हूँ, कार कथा हूँ GOF. जदि G आउ F, G है गला 1 1 1 1 and F है गला 1 1, the GOF is 1 1. आउ ये है गला on to, G भी on to, F is also on to. जदि G on to, F on to, GOF is also on to. Now एटा होचे दुईटा इंपोर्टेंट जिनिस. Now the inner function f, the inner function is f. जदि f 1 1 हला, if f is 1 1 irrespective of g जहा हले हो, हाँ, f जदि 1 1 हला, एट देखा f जदि 1 1 हला, g जहा भी हो, either 1 1 on to जहा भी हो, कौन है गला g और f will be 1 1. आउ g जदि on to हला, G जदि on to हेगला, irrespective of f, this is on to. तो G on to हेले, G और f on to, f 1 1 हेले, G और f 1 1, और remaining दुईटा property कौन हेले, दुईटा जाक 1 1 हेले, G और f 1 1, दुईटा जाक on to हेले, G और f on to. ठीक है? चल inverse of a function. Inverse कौन होची? For injective and surjective functions. For injective and surjective functions, injective माने 1 1 and surjective माने on to. 1 1 on to. If a function is 1 1 and on to, यदि f हो गोटे function both 1 1 and on to, then this is called bijective. This function is called bijective. So for all bijective functions, f inverse will exist. F inverse exists. No? So the f is a function from x to y, then f inverse will be a function from y to x. माने domain of range interchange हेगला. Domain of codomain कौन हेगला? Interchange हेगला. f रो जोटा domain थिला सेटा f inverse रो range हेगला. आउ f रो जो range थिला से f inverse रो domain हेगला. And a function is said to be invertible. Function का invertible कहिबा when the inverse of the function will be exist. A inverse केतेବେଳେ exist हो? When the function is bijective. When the function is bijective. Now we'll see how do you find the inverse. Inverse हमें बाहर केमती करियो? How do you find the inverse? Let f of x is equal to 2x plus 3. Find the inverse of the function. So clearly this is 1 1 and on 2. Clearly this is 1 1. ये function टा 1 1 भी अच्छी आउ on 2 भी अच्छी. तापर कौन करिया? f of x को y करिया. f of x is y, तो 2x plus 3. अब x को y रो फॉर्म रे एक्सप्रेस करियो. Try to express x in the form of y. So y minus 3 will be equal to 2x. 2 रे डिवाइड कर दो, तो y minus 3 by 2 equal to x. Okay. Now x is equal to f inverse of y. देखो f is a function from x to y ना, तो हम एमटी लिख परियो f of x is equal to y, तो x is equal to कौन है? f को सही पटे नहीं जो f inverse of y, तो x जगह हम कौन लिख दिले? f inverse y equal to y minus 3 by 2, तो f inverse y जगह x कर दे, f inverse x equal to x minus 3 by 2. So this is how you can find out the inverse of a function. Function को आगे 1 1 on to check कर दो. तापर कौन करियो? f of x को y लिखियो. Write f of x is y. Try to express x in the form of y.
x को y रो फॉर्म रे एक्सप्रेस करियो चेष्टा करियो f इनवर्स y मिल गेला से x हेगला x को f इनवर्स y लिख देल नाउ रिप्लेस y बाय x जोटे x y थिला सेठी x को सब्स्टिट्यूट कर दो ठीक अछि now what example नहीं चाहिए हां let f be a function from r to r defined on f of x is equal to 3x plus 5 so that क्या शो करना है देखो f is bijective मतलब both 1 1 as well as on 2 1 1 भी शो कर यार अछि आउ on 2 भी शो कर यार अछि आउ find f inverse of 1 and f inverse of 0 चलो आगे चेक करियो when whether this is bijective or not bijective मतलब 1 1 and on 2 तो given f of x is a function from r to r and that is given by 3x plus 5 1 1 केमति चेक करियो to check a function is 1 1 consider two elements let x1 comma x2 belongs to r therefore if f of x1 equal to consider कौन कंसीडर करिवा कि f of x1 is equal to f of x2 this is what we will consider एठो हम प्रूफ करिवा x1 is equal to x2 so what is f of x1 माने 3x1 plus 5 x जगह x1 लिखे 3x1 plus 5 equal to f of x2 which is 3x2 plus 5 5 5 cancel हो गला 3 3 cancel हो गला so this is x1 equal to x2 which is f is injective that is 1 1 f हो गला 1 1 अभी on to check करियो मैं कौन करियो let f of x will be equal to y f of x equal to y so f of x will be 3x plus 5 is equal to y try to express x in terms of y so this will be y minus 5 so x is equal to y minus 5 by 3 it is x now let us find f of x this has to be y f of x बाहर गला सेटा y हेबार अछि f of x is equal to f of x माने एटा और x जगह हम कौन पुट कर दो 3 into x जगह हम पुट कर देले y minus 5 by 3 plus 5 तो 3 3 कैंसिल हो गला minus 5 plus 5 कैंसिल हो गला f of x equal to y therefore f is on 2 जदि f of x y गला f कौन हो गयो on 2 हो गला जदि on 2 हो गला therefore f inverse exist f inverse कौन करियो exist करियो so this x is nothing but your f inverse and f inverse equal to y minus 5 by 3 so this is f inverse of y now f inverse of x is equal to this will be x minus 5 by 3 so this is one of the answer f inverse मिल गला first part is done f inverse of minus 1 now f inverse of minus 1 तो x को लिख ले minus 1 minus 5 by 3 तो minus 6 by 3 will be equal to minus 2 then f inverse of 0 so this will be 0 minus 5 by 3 and that is equal to minus 5 by 3 so this is how you can find the inverse of any given function this is the criteria प्रथम कौन करिवे 1 1 चेक कर देले on 2 चेक कर देले on 2 हे गला जो x को f of x को y लिख ले से x टा को हम कौन करे f inverse y कंसीडर कर दे और y will be replaced by x to get the inverse of the function तो एटा हे फंक्शन रो थ्योरी this is the theory of function हम कौन डिस्कस करले what is a function what is a 1 1 function or injective function what is on 2 function or surjective function यदि function both 1 1 और 1 2 हला माने injective और surjective हला this is called bijective function यदि function bijective अछि तो यार inverse exist करिवो this is the way to find the inverse अब हम पढले composite function कौन पढले यदि गोटे function f अछि from x to y आ गोटे function अछि g from y to z then जो function दा x रो z को मैपिंग करियो x रो z को मैपिंग करियो that is your GOF is f को मैपिंग करले GOF हो ना GOF रो प्रॉपर्टी हम कोन देखले GOF रो प्रॉपर्टी हम देखले जदी f11 g11 GOF is 11 f12 g12 GOF is on 2 राइट जदी f11 हला जदी f11 हला then GOF is 11 और जदी g on 2 हला GOF is on 2 एथि हम पढी राइट या को बेस करी किछ क्वेश्चंस करी आपन को टेक्स्ट बुक रो एक्सरसाइज दैट इज फ्रॉम एलिमेंट्स बुक ओके अब जदी मो चैनल रो नुआ अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बहुत मन रखियो सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन टा प्रेस कर दे सो दैट पूरा बुक मु अपलोड करियो जाउछ हां एटा फर्स्ट चैप्टर या पर सेकंड चैप्टर आछो थर्ड चैप्टर आछो फोर्थ चैप्टर आछो सब गोटे गोटे चैप्टर आछो एमती एकदम इजी वे रे आछो हां इजी वे रे आछो और सब डिजिटल प्लेटफॉर्म रो होछ राइट तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रति वीडियो रे लाइक कर दे सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक
more videos which are required for you. Till then, bye.